Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I hope you're all well. I've got this new tutorial for you. This was a real bride and this will be in Urdu and in English. Now I went to this bride's house and basically I've already done her nikah, which I actually did put up, and we started off doing the eyebrows with the Kat Von D brow gel. तो यहाँ पे ये मेरी रियल ब्राइड थी, तो इसका मैंने निकाह लुक भी लगाया हुआ है कुछ हफ्ते पहले, एंड ये इसका ब्राइडल था. यहाँ पे मैंने इसके आईब्रोज किए एंड देन यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ आई बेस की वजह से. वो आई बेस मतलब इस दफ़ा नहीं यूज़ किया था. कंसीलर मतलब अच्छा है एज़ वेल. मैंने कहा एक दफ़ा आपको कंसीलर लगा के भी दिखा देती हूँ कि आप कंसीलर के साथ भी ये ऐसे हैवी लुक्स कर सकते हैं. So I went in with my Too Faced concealer instead of my P. Louise base today, purely just to show you guys as well that you can go in with concealer instead of the base as well. I mean, this blends out really, really nicely and it's really easy to work with as well. So I'm just carving out the eyebrows and then I'm going to get rid of all the harsh edges as well. So यहाँ पे मैं बस कंसीलर इस्तेमाल कर रही हूँ एंड आईब्रोज करके इनको कार्व कर रही हूँ एंड देन जो हार्श एजेस है उनको ब्लेंड कर दूँगी और आप देखेंगे कि इसकी ब्लेंडिंग बहुत जल्दी और आसानी से हो जाती है. So then I'm just going to blend everything away and pat all the excess away. So my bride actually wanted to go for a really heavy bridal look. Her mum had already said to me, look, we want to go really, really full on, really heavy. So that's exactly what we did. We did a really heavy base, heavy eyes, the lashes were heavy, and I'll go through everything that I did and how we decided everything as well. So मेरी जो दुल्हन है इसको बहुत ही हैवी ब्राइडल चाहिए था. इसकी अम्मी पहले मुझे बोल चुकी थी आके कि इसका बहुत ज़्यादा हमें हैवी फुल ऑन ब्राइडल चाहिए. तो हैवी आईज हमने की थी एंड हैवी बेस वगैरह सारा कुछ लैशेस एंड वो साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी. ये मैंने एक ऑरेंजी ब्राउन सा लिया है एंड इस मैं अभी टैपिंग मोशन से करूँगी. आपको नज़र आ रहा है कि प्रोडक्ट नीचे गीला है, तो टैपिंग मोशन से शुरू करूँगी एंड इसका पिगमेंटेशन लेके आऊँगी एंड देन इसको ब्लेंड करूँगी. फुल आई पे कर रही हूँ इसको एंड देन इसको ब्लेंड करूँगी. सो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका मेकअप सही नहीं होता एंड ब्लेंडिंग सही नहीं होती या चिपक जाता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर भी लगा सकते हैं कि बेस फिर वेट ना हो. सो I've gone in with a brown shade eyeshadow and I'm just tapping in. The base is wet, so you can see how wet it is. So I tap it on first and then I start blending. Now if you're scared to do this, or if you find that this is difficult to do, or you're not getting on with this technique, you can always go in with a very, very small amount of translucent powder before you start applying your eyeshadows, and then you can go in with your eyeshadows as well. So you can try that out if you want to. So I'm literally just using a fluffy brush, tapping on the product where I need it, and then when I can feel that it's not tacky, that's when I start blending away. So ये पूरी आंखें पे मैंने ये लगा दिया है आई शेडो एंड इसको साथ साथ अब ब्लेंड की जा रही हूँ. So I continue blending until I'm happy with the blend that I've got. Obviously, when I do my work, I do it in stages, so it's quite difficult sometimes to see what I'm doing, but this is the way I work, so this is the only way I can actually show you guys. So here I've gone in with a slightly darker colour now, so this was like a darker brown. So on the outer and inner corners of the eyes, I'm going in with a slight darker brown now and giving it some depth. So अभी यहाँ पे एक स्मॉल ब्रश लिया है एंड एक डार्क ब्राउन कलर लिया है आई शेडो का मैट वाला एंड इसको आउटर एंड इनर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ एंड देन थोड़ा सा ब्लेंड करके तो मिडल तक लेके आ रही हूँ हल्का सा. If you guys aren't already following me on Instagram, please follow me on my Instagram. It's Shazma MUA. You get to see a lot more videos there. The looks obviously are there, updated there a lot more quicker than I do on YouTube, and there's a lot more like different things that you can see there as well. So do follow me there. So then in the middle of the eye, I applied like a shimmery gold. Now I was using my Pat McGrath palette here, so there was a gold in there. If I was using the Jacqueline Hill, I probably just would have used one of the golds from there. So just I wanted like an antique gold. So यहाँ पे मैंने एक गोल्ड लिया है. मैंने पैट मैकग्राथ का पैलेट यूज़ किया है. यहाँ पे ये सारे कलर्स उस पैलेट से है, लेकिन आप मैं ज़्यादातर जैकलिन हिल का यूज़ करती हूँ, तो उसमें भी एक गोल्ड है जो मैं अप्लाई करती हूँ. ये फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ, देन इसके ऊपर मैं थोड़ा सा शिमर भी लगाऊंगी एंड ग्लिटर. So I'm doing this all in stages, so the depth of the eye comes with all these stages. I know it's a lot of product, but it makes a difference at the end of the day.
So then I've gone in with a pigment from Take Two Cosmetics, and it's a really, really pigmented pigment, as you can see. So I've just applied this, and then I go in and start blending around the harsh edges, and I'm adding back in the dark color that I used as well. So यहाँ पे मैंने टेक टू का पिगमेंट इस्तेमाल किया. पहले मैंने ग्लिटर ग्लू लगाया and then pigment लगाया. I forgot to mention that I did add a little bit of NYX glitter glue first before adding my pigment on. Pigments are really difficult to work with sometimes, so if you do go in without anything, you will get a lot of fallout later on. So then I'm just blending in the outer and inner corners again, just so obviously there's a seamless blend. So यहाँ पे outer and inner corners को फिर दोबारा blend किया जा रही हूँ. थोड़ा सा जो dark color इस्तेमाल किया था, and हल्का हल्का सा इसको blend किए जा रही हूँ. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लिटर ग्लू फिर लगा रही हूँ, एंड इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर लगाऊंगी. ये भी टेक टू कॉस्मेटिक्स का था, एंड इसको थोड़ा सा हल्का सा लगाया था, बहुत ज़्यादा भी नहीं किया था. So then I've gone in with my NYX glue again, and I've gone in with a glitter called Cocoa from Take Two Cosmetics, and I'm adding this on just to the center of the eye, and I'm not packing it on too much, so there are gaps in between, so I didn't want like a full glitter eye there. So we've just added that on. So I go in with my NYX glue, and then I go in with a slightly fluffy brush and I tap on my glitter. And once again, I'm blending all the eyeshadows, making sure everything is blended. I know at the moment it looks a little bit messy, but once I clean it up, everything kind of looks fine. So just on the baseline, I'm adding some black eyeshadow just to give it a little bit of depth. So यहाँ पे मैंने blending कर लिया. यहाँ पे मैं एक flat brush इस्तेमाल कर रही हूँ, and एक black सा eyeshadow लेके and जो lash line है ना उसके ऊपर थोड़ा सा लगाई जा रही हूँ and smudge कर रही हूँ. यहाँ आप देखेंगे कि बिल्कुल perfectly मैंने blend नहीं किया था, क्योंकि मैं lashes लगाऊंगी, and lashes जब लगा लेती हूँ फिर मैं देखती हूँ कि कितनी blending मुझे चाहिए, कितना उसको मतलब ऊपर या eyes पे मैंने blend करना है, इसलिए थोड़ा सा unblended छोड़ देती हूँ इसको. So I'm just tapping the colour on and then I'm blending it out. Now at this point it will look a little bit unblended, but when I work with these kind of eyeshadows or these looks, I like to add my eyelashes on first and then decide of how dark I want to go and how much I want to blend it out. So यहाँ पे मैंने सारा कुछ साफ़ कर दिया. मैंने विटामिन सी का सीरम लगाया था, आई क्रीम लगाई है, एंड यहाँ पे मैं अपना सन क्रीम लगा रही हूँ. So ये सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ, आप कोई भी ब्रांड अपने पसंद का इस्तेमाल कर सकते हैं. So I've gone in with my vitamin C cream, my eye cream, and I'm also using some sun cream here. Now you can go in with all the products that you want to use from different brands, so you don't have to use the ones that I'm using. Now inside the eye, I went in with some gel eyeliner, which is from Inglot. So I'm just tapping this on the waterline. Now she is wearing lenses. A lot of my brides do have lenses in. So what I find is I tap it on and then I kind of like hold the eye down a little bit and ask my bride to keep looking up if you can. I know this bit is really, really difficult, but for it to dry, and then afterwards I go in with a little bit of eyeshadow as well just to blend it out. So eyeliner मैंने लगाया है वाटर लाइन पे जेल लाइनर, और फिर थोड़ा सा मैं ब्राइड को बोलती हूँ कि ऊपर देखती रहे, थोड़ा सा उसको आई को ना मैंने खींच के नीचे किया हुआ है कि लेंस के ऊपर ना लगे. फिर 2-3 मिनट में या 1 मिनट में हो जाता है. तो यहाँ पे हमने लैशेस लगाई थी ना. मेरी ब्राइड मैंने बताया कि उसको चाहिए था हैवी लुक, से हमने एक लैश नहीं डबल हमने किया था. तो ब्राइड को मैंने बीच में दिखाया था एक लैश के साथ कैसे लग रहा है, डबल के साथ कैसे लग रहा है. तो ये हमने यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं. तो फिर हमने डबल पे ही डिसाइड किया था. तो पहले मैंने एक लैश लगाई, फिर उसको सेट करके जब फिक्स हो गया फिर उसके ऊपर हमने दूसरी लैश लगा दी थी. तो यहाँ पे सिर्फ एक लैश लगी हुई अभी, एंड दूसरी अभी लगाई जा रही हूँ. So we decided we wanted to go for really heavy eyes. So I showed my bride the eyelashes, and she wanted to go quite heavy. So I showed her having one lash on, and we could double up if we wanted to. So she decided she wanted to go for double lashes. So we've already got one lash on now, and then I let that set. And then what I did is I cut the second one slightly lengthwise smaller, and then I added that on top, and then we were ready to go. So now here we're ready to start on the base. So I'm using my Makeup Forever Essentials palette. This is the foundation palette, and I'm using this to color correct. My bride was really, really fair, so I've gone for like the slightly lighter color, and this worked well on her.
यहाँ पे हम कलर करेक्टिंग कर रहे हैं, लैशेस लगा दिए एंड देन यहाँ पे अभी ये फाउंडेशन पैलेट इस्तेमाल कर रही हूँ जहाँ पे मैं कलर करेक्टिंग कर रही हूँ। हैवी बेस किया था तो इस दफ़ा हमने क्रायोन पेंट स्टिक इस्तेमाल किया। मेरी ब्राइड जो है बहुत फेयर थी। कैमरे पे आई एम सॉरी, हमेशा कलर कई दफ़ा ना बहुत ब्राइट लगते हैं, जैसे कि जो मैं लगा रही हूँ कलर स्किन का शायद इतना नहीं लग रहा हो, लेकिन असल में मुझे नज़र आ रहा होता है कि मैच हो रहा है या नहीं। मतलब इसका शेड एक्चुअली डार्कर था जो मैंने लगाया था इसकी अपने स्किन टोन से। सो यहाँ पे मैंने ऊपर से अभी नाज लॉन्ग वेयर लगा रही हूँ। So I went in with a really heavy base today. So we went in with Krylon paint stick, and then on top of that we're adding our NARS longwear. Lovely combination to do. It is full on and it is heavy coverage, and I know not everyone's going to like this, but obviously I do listen to my brides and I do what I can do. But in reality, at the end of the day, the makeup lasts them all day and it does not look cakey. None of the brides, alhamdulillah, don't look cakey when I've finished off applying all these products. And I know it's product on product, and I know a lot of people, there are some people out there who may not want this, which is fine, or they don't agree with it, which is absolutely fine. But obviously this is what my brides want and that's what they're booking me for. So if I go and do something very subtle on them, they wouldn't be very happy. So we've applied this second foundation with a brush, and then what I'm going to do is blend it all out with a beauty blender. So यहाँ पे हमने फाउंडेशन 2 लगा दी है, क्रायोन लगाई है, नाज लॉन्ग वेयर लगाई है, एंड इसको ब्रश से मैंने अप्लाई किया था। एंड देन एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से इसकी ब्लेंडिंग करूँगी और काफ़ी देर के लिए मैं ब्लेंड करती जाऊँगी। So now I'm just using a damp beauty blender and I'm blending away. So this bit does take quite a bit of time here, so you've got to blend away quite a bit here, otherwise it will become if it's not blended and you start powdering and things like that, that's when it becomes a bit cakey and it can start peeling and things like that. So you really have to take your time here and really blend away quite a lot. So the colour of the foundation, basically, I was just explaining before as well that my bride was really, really fair, and eventually when I'd have actually done everything, the foundation was actually slightly darker than her own skin tone. Now on camera you can't always tell because I have got a ring light on as well, but obviously in reality I can see whether the colour matches or not. So on camera I know sometimes it can look like I may have gone slightly lighter than what I should have done, but it's not the case. And obviously once I've started adding in the other products as well, the colour comes back into the face and it complements the skin tone. So here I've gone in with 2 concealers. I went in my Too Faced, which was a slight more matching colour, and then I've got a lighter shade in the Juvia's Place concealer on the inner corners. So 2 concealers यहाँ पे इस्तेमाल किए। एक आउटर कॉर्नर्स पे मैंने लगाया पहले जो स्लाइटली उसका मैचिंग कलर है, एंड देन ये सेंटर में अभी मैं यूज़ कर रही हूँ जूवियस प्लेस का एक लाइट कलर का शेड है, एंड उससे मैं कंटूरिंग कर रही हूँ, हाईलाइटिंग कर रही हूँ। So we went in for quite a heavy contour as well. So I'm using my Huda Beauty Tantour here, and you can see I've brought the jawline slightly above where it is, and then what we're going to do is blend all this away. Now what I do is right at the end, once I've done the hair and things like that, that's when I actually go back to the face and check all the blending, because even though I wanted a heavy contour, I like to have it a blended contour. So what I tend to do is I finish off the makeup, I do the hair, and that's when I then go back and check if I need to blend out the contour. So sometimes occasionally in between shots you might think, oh, that's not blended, but at the end is when I do everything, and I don't always show you those bits because by that time I'm rushing. So I can only show you the main bits here, and then it's at the end, is when I kind of like go over and blend out, or if the lipstick's wrong, or if there's a little bit of bleeding and things like that, I can correct that. So I'm just going to use a brush here and gently start blending away. So heavy contouring हमने की थी, क्रीम contouring कर रहे हैं, तो इसकी जो blending होती है इसकी मैं करती रहती हूँ, एंड obviously सेट कर देती हूँ। एंड पे जब मैं इसके बालों के बाद मैं चेक करती हूँ कि सारा कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं जल्दी में ऑब्वियसली मैं मेकअप कर रही हूँ, देन बाल कर रही होती हूँ, एंड वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा होता है कि साइडों से थोड़ा सा इसको ब्लेंडिंग चाहिए या नहीं चाहिए, एंड इस टाइप की चीज़ें नॉर्मली मैं कैमरे पे नहीं दिखाती। सो ऑब्वियसली बीच में शायद आपको लगे कभी कभार कि यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हुई थी या यहाँ पे ये सही नहीं लग रहा था, लेकिन फाइनल जो होता है वहाँ पर सारा कुछ मैंने किया हुआ होता है।
वो हमेशा नॉर्मली फाइनल पिक्चर्स में नज़र आ जाता है कि ओबियसली कि मैंने ब्लेंडिंग कर दी थी, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि बीच में मैंने ओबियसली जब ये मेकअप ख़त्म करूँगी एंड बीच में शायद आपको लगे कि सही नहीं लग रहा, लेकिन वो सारा कुछ मैं एंड पे करती हूँ। हर चीज़ मैं मतलब इसमें ऐड नहीं कर सकती, स्पेशली क्योंकि रियल ब्राइड थी, तो इस टाइप की चीज़ें जैसे फिर ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा पीछे हट के देखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे कई दफ़ा आपको नज़र नहीं आता। तो हल्का हल्का हाथ से मैं यहाँ पे नोज़ कॉन्टोरिंग भी कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट को साइड्स पे नीचे लेके जा रही हूँ। So I'm using a like it's like a contour brush from Real Techniques here, and I'm just blending away, and I've just done the nose, and I've just taken the product down, and then when I go back in with my highlight and start blending that out, that's when it starts to make a little bit more sense. So you've got to really take your time here. You don't want it to get muddy and things like that. So I'm spraying it with my Benefit Professional spray, and then I'm going to start dabbing away on the highlighter. तो यहाँ पे आप मैक फिक्स प्लस भी यूज़ कर सकते हो, मैंने प्रोफेशनल यूज़ किया है बेनिफिट का जो स्प्रे है, एंड देन मैं एक ब्रश से ही इसको जो हाइलाइटर है उसको मैं टैपिंग मोशन से करके तो इसको ब्लेंड करूँगी। ये जो बीच में मैं हाइलाइटर लगाती हूँ ना कॉन्टोर के बीच में एंड जो लाइन के बीच में, ये इसलिए होता है क्योंकि फिर दोनों को ना मैं सही तरह उसमें ब्लेंड कर सकती हूँ। So you can see I added a slight bit of concealer in between the jaw contour and the cheek contour. So that's normally there so that when I actually blend away like this, then I can actually blend both contours into that bit of the highlight, and then it gives you a seamless finish. Just want to say a big thank you to all you guys as well. I can see that obviously a lot of you have been liking and commenting on my videos, so that really helps me out, so I do really appreciate that. Thank you so much. And one of the videos recently got my first video that went to 1 million views as well, so thank you so much. आपके कमेंट्स एंड लाइक से ही मेरी वीडियोस चलती हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे प्यार देते हैं, एंड एक जो मेरी पहली वीडियो है मैंने पहले लगाया हुआ था कि मिलियन पे पहुंच गई माशाल्लाह मेरी जो पहली वीडियो है, सो थैंक यू सो मच। So here you could use a beauty blender as well. I just like using this brush, but you can go in with a beauty blender as well. So you've really got to take your time here and just make sure you're really tapping everything out. तो यहाँ पे आपने बहुत टाइम लगा के ये ब्लेंडिंग करनी है। आप यहाँ पे डैम ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये ब्रश पसंद है, ये रियल टेक्निक्स का है, लेकिन ये यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है। कई दफ़ा मैं ब्यूटी ब्लेंडर भी इस्तेमाल कर देती हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगा के आपने यहाँ पे ब्लेंडिंग करनी है आइज़ के नीचे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ना उसको आपने ब्लेंड कर देना है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट रह जाएगा जिसको आपने सही ब्लेंड नहीं किया हुआ, देन आपके जब आप पाउडर लगाओगे ना तो तब आपको प्रॉब्लम होगी। So you can see I'm taking a lot of time, and I'm taking my time just blending in any harshness that I can see. So now I'm just going to use a small beauty blender. This is a damp beauty blender. I'm just tapping away, making sure there's no creases, and then I'm going to go in my powder. तो यहाँ पे बस आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कोई क्रीसिंग नहीं है। सो पहले ब्यूटी ब्लेंडर से उसको मैंने टैप किया, एंड देन थोड़ा सा हडा ब्यूटी का पाउंड केक जो पाउडर है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड यहाँ पे मैं उसको सेट कर रही हूँ जब तक वो सारा जज़ब नहीं हो जाता। So I'm using a small amount of powder, which is the Huda Beauty Poundcake, and I'm using this with my beauty blender, and I'm tapping away until it all absorbs away. So you want to get rid of all that powder. So I keep tapping until it's all gone, and I'm going to tap this all over the face in all the different areas that I've got the concealer, and just give it a very light coverage here.
and then I go in with my heavy baking. I find that when I go in straight with my baking, it can leave patches, and that's why I like to do it this way. तो यहाँ पे अगर वेट पे ही मैं बेकिंग कर दूँ ना, मुझे लगता है कि जब मैंने किया पहले पास में कि वहाँ पे पैचीनेस आ गया, तो इसलिए मैं इस तरीके से करती हूँ क्योंकि मुझे फिनिश ज़्यादा अच्छी लगती है ऐसे। तो यहाँ पे अभी मैं हेविली बेकिंग करूँगी, पाउडर पफ पे पाउडर लगा रही हूँ एंड इसको अंडर आई सारे हाईलाइट एरियाज पे ना लगा दूँगी. So again, I've gone in quite heavily with my powder now. I'm using a powder puff, same powder, the Huda Beauty Poundcake, and I'm using this to bake now. I wasn't a fan of baking for quite a while. I'm sure I've mentioned this in my videos as well, but I do keep chopping and changing my techniques, which is why I keep, putting these videos up. There might be something different that I put up, or I figure out that I like, a better way of doing something. Because I think when I was baking before, I was doing it on the wet product, which was not looking right. It just looked cakey, and it looked, for me anyway. I've seen other people do it, and it looks amazing. So, but this is the way I find that it works for me. Then I'm just going over the contour, and I'm using my MAC Studio Fix. So यहाँ पे MAC Studio Fix इस्तेमाल कर रही हूँ, and इससे मैं contouring कर रही हूँ. सो यहाँ पे जो है अंडर आइज़ पे नॉर्मली अगर इतना हैवी मैंने लैशेस लगाई हुई हैं, इतना हैवी ऑब्वियसली मेकअप बेस किया हुआ है, तो लाइटली जैसे कि जो लाइट ब्राउन होता है ना, वही मैं इस्तेमाल करती हूँ एंड अंडर आइज़ पे कर देती हूँ. लेकिन साथ साथ ऑब्वियसली मैं अपने ब्राइड को दिखा रही होती हूँ कि कैसे लग रहा है, कैसे आपको ठीक लग रहा है या और हैवी करूँ. तो वो ऐसे जैसे जब मैं अंडर आइज़ पे कर रही थी, तो वहाँ पे फिर ऑब्वियसली मेरी ब्राइड का दिल था कि थोड़ा सा ब्लैक हो वहाँ पे. हालांकि मैं इतना ब्लैक इस्तेमाल नहीं करती, आपने नोट किया होगा कि काफ़ी लाइटली मैं जाती हूँ. लेकिन हमने ये पहले ऐसे ब्राउन इस्तेमाल किया था, एंड देन उसके साथ साथ फिर हमने ब्लैक भी ऐड किया था. सो काफ़ी हैवी ओवरऑल लुक था ये. So my bride wanted, like I said, a heavy look. So normally with this kind of heavy lashes and heavy eyes and things like that, I probably go quite subtle under the eyes with like a little bit of brown. Now obviously she wanted quite a deep eye going on, so I went in with the browns, and obviously in between I was showing her the mirror and saying, look, do you want me to go darker, do you want me to add a bit of black? And the answer was yes. So we did go in with a bit of black. Now like I said, this is not for everyone, you may not all like it, but please just watch the video for techniques and things like that, and don't attack me for the amount of makeup I've used and things like that, because it's personal preference. My bride wanted this, so that's what I did. सो यहाँ पे मैं इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ, फिर मैं इसका यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक भी ऐड करूँगी. एंड काफ़ी हैविली हम गए थे, लेकिन उसकी जो ब्लेंडिंग है भी मैंने बाद में की थी. सो यहाँ पे मैं ब्लैक ऐड कर दूँगी, एंड देन ब्लेंडिंग कर दूँगी सारा, एंड देन बिल्कुल एंड पे जब मैंने एक्चुअली, क्योंकि मुझे सही तभी अंदाज़ा होता है एंड ब्राइड को कि जब उसके बाल हो गए, ज्वेलरी आ गई कि ब्लैक ही बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, ये बिट इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देते हैं, तो उस टाइम पे मैं कर देती हूँ, जो ऑब्वियसली यहाँ पे वीडियो पे नहीं है. ये वीडियो यहाँ पे ही एंड हो जाएगी कि जब मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दी है. So I added my black as well. Now what I do is I still left it a little bit unblended afterwards. So what I do is I blend away here, do everything. But any adjustments that I need to do, I like to do once the hair's done and the jewelry's on and we've got the full look in mind. At that point, my bride can have a look. And if I feel like, no, we need to kind of like blend this out a little bit, which I did feel the need in this particular look right at the end, I did say, look, I think I need to blend this out a little bit. It's looking a little bit harsh. Let's just blend it out with a little bit brown, and she was happy with that. So it's just one of those things, you won't see that on camera. So obviously when this video ends, you might be thinking, oh, that was quite harsh, or this is quite dark, but that's where I end the video, and I can't keep coming back to it, to be honest with you, especially when I'm doing a real bride, because on that day it's all about my bride. The camera's just on, I catch what I can catch, but the focus cannot be me and my YouTube video. It has to be my bride, so it's her big day. If she's allowed me a video, the camera just goes on and stays on, and I only literally just switch it on and off, and that's it. I don't really have the time, or I don't want my bride to ever feel like I'm more bothered about my YouTube video than her actual makeup. So obviously my focus is just on my bride, and the camera just stays on.
So I'm just using my MAC Studio Fix here, I think it was NC15, and then my Charlotte Tilbury in medium because I actually needed fair and I've still not ordered it. So I use both these powders to blend away the contour, and I'm dabbing away first and then I'm buffing this powder rim. So यहाँ पे मैं दो पाउडर यूज़ कर रही हूँ, मैक का स्टूडियो फिक्स एंड शार्लेट टिलबरी। दो मिक्स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा शार्लेट टिलबरी का कलर थोड़ा सा लाइट डार्क है, सॉरी, तो मुझे लाइट कलर चाहिए था, तो इसलिए दोनों यूज़ कर रही हूँ। So a bit of inner corner highlight just with some dull beauty. And then because we've done all that powdering, all those products, I'm going in with a good amount of MAC Fix Plus. So यहाँ पे हमने पाउडरिंग सारा कुछ ख़त्म कर दिया, यहाँ पे मैंने फिर अभी MAC का Fix Plus यूज़ किया. So I just dried this out, you can use a fan, I'm just using a palette here to fan away a little bit, and then I'm going in with my Pat McGrath highlighter. So यहाँ पे मैंने highlighter लगा दिया, Pat McGrath का है ये gold. Now the blusher was actually from Bare Minerals. I can't remember. It's like a pink toned. I think it's blonde. It's called Blonzer. It's like a blusher and like a contour, something like that. But I can't remember now what the color was. It was like a pinky toned blusher that we used. She was looking flawless, mashallah. I mean, it was a big, I mean, what brides like is obviously when I do them, or even if we've got different makeup artists, and the reason they book different makeup artists is because they want complete different looks on each day. She'd had I think a Nagar Mendi was just like about a week before, so, you know, she had a complete different look for this Baraat day. So then I'm going in with mascara and joining the lashes together. तो यहाँ पे हम मस्कारा इस्तेमाल करें, दोनों लैशेस को सही तरह मैं कर रही हूँ कि सारे कोट हो जाए मस्कारा के साथ. एंड देन लिप्स के लिए हमने यहाँ पे मैक का लिप लाइनर इस्तेमाल किया है कोक में, एंड देन 2 मिक्स करके लिपस्टिक्स ना तो आगे लिखी हुई आएंगी, तो वो मैंने इस्तेमाल करके तो इसका लिपस्टिक का शेड किया था. So I'm going in with a lip liner. This is from MAC and it's cork. I always use this brown lip liner, or a brown lip liner with this kind of shade, and then I go in because I kind of like don't overline unless my bride kind of like wants to overline her own lips, and then what I do is I take the lipstick and that normally goes over it, so I just normally go in quite gently with a slight lip line. And then I've mixed 2 lipsticks from Stila. These are liquid lipsticks that I've used, and then what I'm doing is it wasn't actually Stila, sorry, it was Too Faced, not Stila. And what I've done is mix them in, and I'm just filling in the lips now. So the lips you've really got to take your time on, and again with the lips as well, I go in and then I let it dry before I make any adjustments, because if you're going to start fixing a wet lipstick, it's going to go everywhere. So I do normally let it dry and then I will go in, and if I need to go around it with a bit of concealer or clean it up or things like that, I'll do it once it's actually dry. So I normally go back to the hair, continue doing the hair, and then I'll come back to the lips and check that as well. So लिपस्टिक अगर आपकी कोई गलती भी हो जाती है ना, तो उसको आप ड्राई होने दें, क्योंकि अगर आप गीली लिपस्टिक के साथ करें ना, नॉर्मली वो फैल जाती है. सो नॉर्मली मैं यहाँ पे लिप्स कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ, एंड देन इसकी जो भी एडजस्टमेंट होती है बाल करती रहती हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कोई मैं अगर एडजस्टमेंट करनी होती है तो फिक्स कर देती हूँ. So I'm really taking my time. And then the final touches where I go back in and I'll go over the eyeliner a little bit, blend that out, add a bit of glitter if I need to. I did go in with a little bit of eyeliner that I'm just cleaning up the eyelashes really, and then I went in with some Urban Decay glitter just to give it a little bit more pop in the middle. So यहाँ पे थोड़ा सा eyeliner कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा fix कर रही हूँ, eyelashes को भी साथ साफ कर रही हूँ जो final touches होते हैं, and then थोड़ा सा glitter add करूँगी eyes पे, जो थोड़ा सा और इसको पॉप दे देगा.
So this was pretty much the full makeup video. I do have a hair tutorial as well, and I will be trying to put that up in the next few days if I can. So here we've done our hair and everything, and I was just going to take some pictures. So ये final look था, बाल शाल हमने कर दिए थे, बालों का भी tutorial लेके आऊँगी, and then final यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी pictures भी दिखा दूँगी. एंड पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था, so यहाँ पे बस सही मेरे पास pictures नहीं है यहाँ पे लगाने के लिए videos, लेकिन ये इसकी थोड़ी सी एंड पे जो वीडियोस ले रही थी. So I hope आपको tutorial पसंद आया. I hope you guys have enjoyed this, and inshallah I will see you soon. Don't forget to leave a comment, and I'll see you soon. Allah Hafiz.